It was suggested that I should speak on the 9 angas or lakshanas, as Prahlad Maharaj called, of devotional service. So we read yesterday this verse from the 7th canto, chapter 5. Actually 2 verses together, 23 and 24. So हम आज कंटिन्यू करेंगे. कल ऑलरेडी हम लोग नवधा भक्ति के बारे में बातें कर रहे थे. कल 7th कैंटो 5th chapter भी हम लोग रेड किया पढ़ा था. तो आज हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. Can you hear him? The mic is not on. हरे कृष्णा. Okay. So हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे. कल ऑलरेडी ये सेशन हुआ था, तो उसमें हमने नवधा भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे. So I'll just read the verses again. And then yesterday we spoke a little about Shravanam, the first lakshana. So today we can read a little about, discuss a little. Not working. मैं जोर से बोलता हूँ. ठीक है. I'll speak louder. Speak out. It was working, but now then it Actually, battery problem. Maybe battery is okay. No problem. मैं थोड़ा जोर से बोलूँगा. थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी. You can hear him. Yes. आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? नहीं. सो हम लोग ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया था, नवधा भक्ति के बारे में स्टार्ट किया था. सो हम वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं. आई डोंट नो मैं कल खाली. सो कहाँ तक किया था? Where did we stop, please? Where did we stop? We talked. I read. I didn't. I mean, it's a very long purport to these verses. Okay. Anyway. Actually, I said yesterday it's not. It is actually the longest purport in the whole Bhagavatam, 14 pages. So we didn't. I just read a little bit from about in the section which describes Shravanam, hearing. Okay. कल हमने श्रवणम के बारे में डिस्कशन किया था, चर्चा की थी. आज हम कीर्तनम, right? So today we'll read a little about Kirtana. Yeah. तो आज हम कीर्तनम के बारे में बातें करेंगे. I'll just read the verses again. Sri Pradada Uvacha Savanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedana Iti Pumsa Pita Vishnu Bhaktis Chinnavalakshana Kriyata Bhagavati Adha Tanmanya Ditam Uttamam. Prahlad Maharaj said, hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, paraphernalia and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respectful worship with 16 types of paraphernalia, offering prayers to the Lord, becoming his servant, considering the Lord one's best friend, and surrendering everything unto him. In other words, serving him with the body, mind and words. These 9 processes are accepted as pure devotional service. One who has dedicated his life to the service of Krishna through these 9 methods should be understood to be the most learned person, for he has acquired complete knowledge. Maybe I can read just translation, and when you describe it, explain it, then I can translate. I'll just read this translation part. Yeah. You're going to read. Yeah, sure. So प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साथ समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना, शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियाँ स्वीकार की गई हैं. जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है. So this 9 process has been separately analyzed but actually they intertwine. They, like Prabhupada also says somewhere here, that each of them actually include the others. तो ये 9 विधियाँ हैं, ये इनके बारे में अलग अलग रूप में बातें की गई हैं, बट फिर भी एक दूसरे से मिली जुली हैं. और प्रभुपाद ने भी इस बारे में बोला है कि ये 9 विधियाँ जो हैं आपस में एक दूसरे से मिली जुली हैं. So therefore it's not surprising that under the point of Shravanam there has also been discussed Kirtana. तो इसके लिए आश्चर्यजनक नहीं है कि श्रवणम में कीर्तन के बारे में भी चर्चा की गई है. जब भी हम श्रवण के बारे में बात कर रहे हैं तो कीर्तन भी उसमें मिला हुआ होता है कई बार. Because obviously
if there is to be Shravanam, somebody has to do Kirtanam, because otherwise, what are you going to hear? क्योंकि अगर श्रवण हो रहा है तो obviously कोई ना कोई तो कीर्तन करने वाला होगा ही, तो इसके लिए दोनों साथ ही साथ चलना चाहिए. So anyway, there is a point 2 called Kirtana. And I'll read a little bit what it says here about Kirtanam. Okay, तो हम कीर्तन के बारे में यहाँ पे और थोड़ा कुछ पढ़ेंगे. The hearing of the holy name has been described above. Now, let us try to understand the chanting of the holy name, which is the second item in the consecutive order. It is recommended that such chanting be performed very loudly. Okay, I can already say something about that. हाँ, नाम के श्रवण का वर्णन ऊपर किया गया है. अब पवित्र नाम के कीर्तन को समझने का प्रयास किया जाए, जो उसी क्रम में दूसरे स्थान पर है. ऐसी संस्तुति है कि कीर्तन उच्च स्वर से किया जाए. Because there is a widespread idea among devotees that we should not chant loudly, especially at least talking about, of course, kirtan, but talking about japa. ऐसी एक धारणा है सर्वत्र की जप जो है हमको उच्च आवाज में नहीं करनी चाहिए. कीर्तन तो हम करते हैं, बट जो जप है ऐसा लोगों का मानना होता है कि हम उसको ऊंची आवाज में नहीं करना चाहिए, हमको मन में ही करना चाहिए. And some devotees, they use this as an excuse not to chant with the devotees, like if we are living in or visiting a temple. Many times we are told that best is after Mangalartik we sit down together and chant. तो इस बात को ये बहुत सारे जो भक्त हैं उसको एक एक्सक्यूज उनको क्या बोलेंगे, एक बहाना बना लेते हैं कि हमें साथ में जप नहीं करना है क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि उनको लगता है कि जोर से जप नहीं करना है तो हम अकेले में ही करते हैं. So some devotees, I've heard this many times, devotees saying, devotees are chanting so loudly, I cannot even hear myself. So ऐसा मैंने कई बार देखा है कि भक्त ऐसा बोलते हैं कि भक्त बहुत जोर से जप करते हैं तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ. So they go out, they go somewhere else. तो वो बाहर चले जाते हैं. I have to say it's a bad excuse. It's a bad excuse. तो मुझे एक बार बोलना पड़ेगा, ये बहुत ही बुरा बहाना है. I mean, your mouth is here. It's only not very far from the ear. Even if somebody chants loud, your mouth is so much closer to your ear. You're going to hear it anyway. भले ही हो सकता है आपको दूसरे की आवाज आ रही हो, बट आपका मुंह जो है वो आपके कान से बहुत नजदीक है. Okay. अपना आवाज तो नहीं आएगा. Okay, if there's 100 devotees all chanting loudly, then it's quite some sound. But still, I would say that it shouldn't be a problem. Actually. तो 100 भक्त हैं तो हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, बट ये कोई बहुत अच्छा बहाना नहीं है, जस्ट एक एक्सक्यूज है भागने का. किसी तरह से आगे सो जाएंगे. नहीं, प्रभु जी ने ऐसा बोला. I'm sure some will disagree with me, but that's my opinion. तो हो सकता है कोई मेरे से एग्री ना करे मेरे में, बट मुझे लगता है कि ये. And specifically the objection that we should not chant loud japa, that is contradicted here, and also there's other places. There's one other place in the second canto, one purport where Prabhupada he's citing Srila Jiva Goswami for saying that the holy name should be chanted loudly. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उस चीज़ को काटा गया है कि हमको नाम जब जो है जोर से करना चाहिए, और इस संदर्भ में जीवा गोस्वामी का भी कोई बात बता रहे कि वो भी इस बात को बताते हैं कि हमको नाम जोर से लेना चाहिए. Some years back, I attended some lectures given by Indradumna Maharaj about the life and activities of Haridas Thakur. कुछ साल पहले मैंने इंद्रद्युम्न महाराज का लेक्चर सुना था जिसमें वो हरिदास ठाकुर के बारे में बातें कर रहे थे. Who was designated as Namacharya by Sri Chaitanya Mahaprabhu. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो हमारे नामाचार्य हैं. So, he was in the course of his talks, he was describing how Haridas Thakur he would chant the holy name. तो चर्चा के दौरान वो बता रहे थे कि किस तरह से हरिदास ठाकुर भगवान का नाम लेते थे. He was of course very famous for chanting 3 lakh names a day. तो वो प्रसिद्ध है 3 लाख नाम एक दिन में लेने के लिए. Which is a purely superhuman feat, if you think about it. ये हम आराम से समझ सकते हैं कि एक साधारण नहीं है, सुपर ह्यूमन एफर्ट है. 3 lakhs, that's 192 rounds. तो आप सोच सकते हैं इस बारे में, 3 लाख नाम एक दिन में. How will you chant 192 rounds in a day? Even doing it one day. तो 192 rounds एक दिन में. 192. This is not for ordinary
conditioned souls. This is for persons like Haridas Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati and the like. तो ये साधारण जीव हम जैसे साधारण जीवों के लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है ये। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he did it for 9 years. उन्होंने 9 साल तक ये किया था। Because he had taken a vow to chant 1 billion names. तो उन्होंने 1 बिलियन 10 करोड़ नाम लेने का व्रत किया था, व्रत नहीं, प्रण लिया था। 1 billion is how many crores? 100 crores. So, if we chant 16 rounds, that is it's a little more than 27,000 names a day that initiated devotees are supposed to chant. So 16 rounds. Each mantra is 16 names. So, 16 rounds is 1,728 mantras. But each mantra is 16 names, so it comes up to a little more than 27,000 names. तो 16 माला जप करते हैं, तो उसमें अराउंड 27,000 बार हम नाम लेते हैं भगवान, और टोटल 1,728 बार. Actually, those of us who are, at least those who are initiated, we are chanting a little more than 27,000 names a day. It's quite a lot, huh? तो जो दीक्षित है वो भी 27,000 से ज़्यादा नाम लेते हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा quite an achievement, थोड़ा सा बोल सकते हैं. But there's some way up to go to, so वो जाना होता है कहीं काम करना. So, but by chanting anyway, but it's described, and Maharaj Indradumna Swami, he was describing how he would divide his 3 lakh names in 3 parts. Haridas Thakur. तो महाराज इंद्रद्युम्न स्वामी बता रहे थे कि किस तरह से वो 3 लाख नाम को तीन हिस्से में डिवाइड करते थे. So the first lakh names he would chant loudly, and loudly means loudly. तो पहला 1 लाख नाम जो होता था वो काफी जोर से बोलते थे. जोर से मतलब सच में जोर से. Like at the top of his lungs. वो पूरा एकदम काफी जोर से. Maharaj described like that. I'm sure he took it. It wasn't, he took it from some scripture, some describing the activities of Haridas Thakur. It wasn't. तो महाराज ये सब जो बता रहे थे, जरूर कहीं ना कहीं से वो शास्त्रों से लिया होगा, जहाँ से उनको ये मिली होगी ये information. So the first lakh was chanted very loudly. The next lakh was chanting, as it is said, within his mouth. That means whispering. तो अगला जो 1 लाख होता था वो धीरे-धीरे जस्ट एक whisper की तरह निकलता था. Without making an audible sound, just ज़्यादा जोर से नहीं, बस खुद तक सुन सके वैसे. It said, as it described, within the mouth. उसको बोला जाता है कि अंदर ही अंदर, मुंह में. And the last lakh was chanted in the mind. और अगला लास्ट का 1 लाख था वो अपने मन में ही करते थे. That's how he would chant his 3 lakh names. तो इस तरह से वो अपना 3 लाख राउंड चैंटिंग करते थे. So anyway, the point is, it's recommended to chant loudly. तो बात ये है कि हमको जोर से चैंट करना चाहिए, क्योंकि वो 3 लाख कर रहे हैं, हम तो 27,000 नाम ही ले रहे हैं. Prabhupada also said, if you have problems hearing, then chant loudly. प्रभुपाद भी ये सजेस्ट करते थे कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुमको एक्चुअली जोर से चैंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता है, तो हमेशा प्रभुपाद इसको बोलते हैं. Okay. चैंट करो. We continue reading a little. In Srimad Bhagavatam, Narada Muni says that without shame he began traveling all over the world, chanting the holy name of the Lord. Similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu has advised, Trinadapi sunitena tarorapi sahishnana amanina manatena kirtaniya sadaharihi. A devotee can very peacefully chant the holy name of the Lord by behaving more humbly than the grass, being tolerant like a tree, and offering respects to everyone without expecting honor from anyone else. Such qualifications make it easier to chant the holy name of the Lord. Okay. श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी लज्जा के भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए विश्व का भ्रमण प्रारंभ किया. इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, त्रिनादपि सुनी चैना तरो रूपी सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि. भक्त को चाहिए कि घास से भी अधिक विनम्र होकर, वृक्ष की भांति सहिष्णु होकर तथा हरेक को नमस्कार करते हुए, किसी से आदर की इच्छा न रखते हुए शांति पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे. ऐसी योग्यता भगवान के नाम का कीर्तन करना सुगम बना देती है. The process of transcendental chanting can be easily performed by anyone. Even if one is physically unfit,
classified lower than others, devoid of material qualifications, or not at all elevated in terms of pious activities, the chanting of the holy name is beneficial. An aristocratic birth, an advanced education, beautiful bodily features, wealth, and similar results of pious activities are all unnecessary for advancement in spiritual life. For one can very easily advance simply by chanting the holy name. It is understood from the authoritative source of Vedic literature that especially in this age, Kali Yuga, people are generally short-living, extremely bad in their habits, and inclined to accept methods of devotional service that are not bona fide. Moreover, they are always disturbed by material conditions, and they are mostly unfortunate. Under the circumstances, the performance of other processes such as yajna, dana, tapa, and kriya, sacrifices and so on, are not at all possible. Therefore, it is recommended Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, kalo nastyeva, 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 gatiya anyataha. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting of the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. Simply by chanting the holy name of the Lord, one advances perfectly in spiritual life. This is the best process for success in life. In other ages, the chanting of the holy name is equally powerful, but especially in this age, Kali Yuga, it is most powerful. Ketanad eva Krishna Shah Mukta Sangha Param Bhajet. Simply by chanting the holy name of Krishna, one is liberated and returns home back to Godhead. Therefore, even if one is able to perform other processes of devotional service, one must adopt the chanting of the holy name as the principal method of advancing in spiritual life. Yatnyaya sankirtana praya yajantihi sumedhasa. Those who are very sharp in their intelligence should adopt this process of chanting the holy names of the Lord. One should not, however, manufacture different types of chanting. One should adhere seriously to the chanting of the holy name as recommended in the scriptures. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, कोई भी व्यक्ति दिव्य कीर्तन की विधि को सरलता से संपन्न कर सकता है। यहाँ तक कि जो शरीर से अक्षम है, अन्यों की तुलना में नीच है, भौतिक योग्यताओं से रहित है, या जिसने पुण्य कर्म नहीं किए हैं, उसके लिए भी पवित्र नाम का कीर्तन लाभप्रद है। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए उच्च कुल में जन्म, उच्च शिक्षा, सुंदर शरीर, धन तथा पुण्य कर्मों के फल व्यर्थ हैं, क्योंकि एकमात्र पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा मनुष्य प्रगति कर सकता है। वैदिक साहित्य के प्रामाणिक स्रोत से यह ज्ञात है कि विशेष रूप से इस कलयुग में लोग अल्पायु हैं, उनके स्वभाव अत्यंत बुरे हैं और वे अप्रामाणिक भक्ति की विधियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यही नहीं, वे भौतिक दशाओं द्वारा सदैव उद्विग्न रहते हैं और परम अभागे हैं। ऐसी परिस्थिति में यज्ञ, दान, तप तथा क्रिया जैसी अन्य विधियों को संपन्न कर पाना संभव नहीं हो पाता। अतएव संस्तुति की गई है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव्य 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 गतिरन्यथा। इस कलह तथा कपट के युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के नाम का कीर्तन है। कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। जीवन की सफलता के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। अन्य युगों में भी नाम कीर्तन समान रूप से शक्तिशाली होता है, किंतु इस कलयुग में यह विशेष रूप से शक्तिशाली है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। केवल कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन से मनुष्य मुक्त हो जाता है और भगवत धाम को जाता है। अतएव यदि कोई व्यक्ति भक्ति की अन्य विधियां अपनाता है तो उसे पवित्र नाम के कीर्तन को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की प्रमुख विधि के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। जो अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, उन्हें भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की यह विधि ग्रहण करनी चाहिए, किंतु उन्हें विभिन्न प्रकार के कीर्तन निर्मित नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में संस्तुत पवित्र नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पर गंभीरता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए। So this is one of many places in Prabhupada's books where he emphasizes the importance of chanting not just the holy name but the Maha Mantra. तो हम देखते हैं कई जगहों पर प्रभुपाद के बुक्स में, किताबों में ये emphasize होता है।
stress. किया गया है, उसको जोर दिया गया है कि चैंटिंग कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ चैंटिंग नहीं बल्कि महामंत्र के बारे में जोर दिया गया। Prabhupada says here at the end what I was reading, one should not, however, manufacture different types of chanting. तो हम देखते हैं यहाँ पे जोर दिया गया, प्रभुपाद जोर देते हैं कि हमें अलग अलग तरह की चैंटिंग करने की, कीर्तन करने की विधि इजाद नहीं करनी चाहिए अपने मन से। He says one should adhere seriously to the chanting of the holy name as recommended in the scriptures. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. तो हमें बहुत ही ये इससे हमें क्या बोलते हैं, adhere, yeah. You ask me. I'm struggling finding the word. Adhere. It's just follow. Yeah, I know the meaning, but I'm trying to find the exact Hindi word. तो हमें एक्चुअली अलग विधि, जैसे प्रभु जी ने बोला कि हमें अलग अलग विधि नहीं अपने मन से इजाद करनी चाहिए, तो हमें जो शास्त्रों में बताई गई है उसको ही पकड़ के रखना चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी निकालना है। हाँ, उस पर जोर देना चाहिए जो विधि शास्त्रों में इंगित की गई। So there's one problem, however. एक प्रॉब्लम है लेकिन उसके लिए। It was pointed out by Lord Chaitanya in the ISKCON prayer. There's this Durdaiva problem. तो ISKCON में चैतन्य महाप्रभु ने इसके बारे में बताया, इस समस्या के बारे में। That we have Durdaivam ihadjani na anuraga. We have no taste. तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमें कोई अनुराग नहीं है नाम के प्रति, कोई टेस्ट नहीं, रुचि नहीं। I mentioned this yesterday also. कल भी ये हमने बात बताई थी। So what to do about it? तो हमें क्या करना चाहिए? Well, one thing to do is just chant anyway. एक चीज हम कर सकते हैं कि जस्ट आप जप कीजिए, अनुराग हो या ना हो। The example is also there in the scriptures that even though the hearing of Krishna Katha is transcendently sweet, but just like a person who has jaundice, he cannot taste the sweetness of sugar. So similarly, because we are materially conditioned, we cannot taste the sweetness of hearing and chanting. तो एक उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में, जैसे कि हम देखते हैं जब कोई जॉन्डिस किसी पीलिया से बीमार हो जाता है तो उसे चीज़ों में स्वाद नहीं आता है, तो लेकिन उसके लिए क्या बताया जाता है कि आप उस चीज़ को खाइए, जैसे गन्ने का जूस पीजिए तो आपको धीरे धीरे स्वाद आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि हमें भी भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि हम बीमार हैं, इसके लिए हमको स्वाद नहीं आता। We are so addicted to sense gratification that in spiritual life we also, we try to enjoy, devotional service. तो हम इंद्रिय तृप्ति से ग्रस्त हैं, इसके लिए हम स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम एंजॉय करना चाहते हैं, हमारे वो जो वृत्ति है वो गई नहीं है। Certainly devotional service is supremely enjoyable, but in the beginning there has to be, some we have to come to a higher platform than just looking for enjoyment even in spiritual life. तो ऐसा ये जरूर ऐसा है कि आध्यात्मिक जीवन में आनंद ही आनंद है, बट ऐसा नहीं होने की हम शुरुआत से ही हमें क्या बोलते हैं, हम बस आनंद की खोज में, आनंद तो ऑब्वियसली हमें चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें बिना अपने आप को एक ऊंचे स्तर पे लाए बिना ही बस भोग के पीछे भागे। भोग मतलब एक आनंद के पीछे भागे, मतलब वो आनंद जो है हमारा आनंद का जो वो आनंद बेसिकली जो आनंद का हमारा जो कंसेप्शन है वो हमारा बस इंद्रिय तृप्ति के स्तर पे ही रहता है। तो इवन हम आध्यात्मिक जीवन को भी हम इंद्रिय तृप्ति जैसा ही लेते हैं कि उसमें कितना हम भोग कर पाएंगे, कितना एंजॉय कर पाएंगे। Again, the same example, the person who has jaundice, he doesn't like sugar, he doesn't want, every morning, I think the way it's done in Ayurveda is, in the evening you put some rock candy in a glass of water, and then next morning it's dissolved and you have to drink that. It's the first thing in the morning. And it doesn't taste good for, if you have jaundice. Even us, we would probably think it's too sweet. तो हम देखते हैं कि जब पीलिया होती है तो उसमें हम जो मीठा लेते हैं, मतलब उसमें आइस में पानी में डाल के अपना कैंडी डाल के, तो वो लेकिन हमें उसमें स्वाद नहीं कुछ आता, तो उसको पसंद नहीं करते, बट फिर भी उसका इलाज है तो उनको लेना पड़ता है। But the point is, we should drink it. We should chant, even if we don't have taste for it. तो बात ये है कि भले ही हमारा कोई रुचि ना हो, फिर भी हमें ये हमको भगवान का नाम जो है लेते रहना चाहिए। ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए कि टेस्ट नहीं आ रहा तो छोड़ दें, उसको लेते रहना चाहिए नाम। We should take it as the medicine. उसको हमको दवा की तरह लेते रहना चाहिए। And if we do that, we surrender to the holy name, to the process of chanting, then taste will come. There's no doubt. तो ऐसा हम करेंगे, अगर हम नाम लेते रहेंगे और अपना समर्पण भगवान के नाम के लिए हमारा रहेगा,
तो रुचि जो टेस्ट जो है वो आएगा धीरे। The paradox is that the taste comes when you don't look for it, when you don't search for it. विडंबना ये है कि स्वाद तब आता है जब हम उसके लिए नहीं खोज रहे होते। Yeah, it's strange. It's like that, no? But ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, बट ये ऐसा ही है। we should chant as a service to Krishna. हमें जप करना चाहिए एक सेवा की तरह, न कि अपने स्वार्थ भोग के लिए आनंद। There was one. Actually, I remember there was one incident described by one of the early devotees. His name was Vaman Dev. It was in Montreal. Prabhupada he had to leave USA in I think 68 for visa reasons. So he moved. For some time he stayed in Canada in Montreal, or Montreal as they call it, the francophone Canadians. French anyway, doesn't matter. But he stayed for some time in Montreal. तो एक घटना बताना चाह रहे प्रभु जी की, जिसमें कि प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में थे कनाडा में, और यूएसए के लिए वो जाने वाले थे। तो एक भक्त कुछ बता रहे थे, उस बारे में बताना चाह रहे थे। And there was one boy, I think he joined there, I'm not sure, but his name was Vaman Dev. उनका नाम वामन देव था। So one time they were having kirtan, and Prabhupada was staying in a different place. The temple was it was a makeshift temple. It was in a bowling alley where they play. It was made for playing bowling, but they made it turned it into a temple. तो वो जो वहाँ पे जो मंदिर थी, वो कोई प्रॉपर टेम्पल नहीं थी, वो एक बॉलिंग एक गेम होता है, उसको उन्होंने एक्चुअली मंदिर में कन्वर्ट किया था, मंदिर में चेंज किया। So after the program, after the kirtan, they came out on the street. They were going to the apartment where Prabhupada was staying. तो कीर्तन करने के बाद वो जहाँ प्रभुपाद स्टे कर रहे थे, वहाँ पे वो गए थे। And as they were walking on the street, Vaman Dev, he said to Prabhupada, he said, "Oh, the kirtan was so nice this evening. I really enjoyed it." So he said, Prabhupada said, Vaman Dev said to Prabhupada. So Vaman Dev das. वामन देव ने कहा प्रभुपाद को कि कीर्तन आज का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एंजॉय किया मैं। And I'm sure he was quite surprised by Prabhupada's reaction. और वो प्रभुपाद की जो प्रतिक्रिया थी उसके ऊपर, उससे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। Because Prabhupada said, the kirtan is not for your enjoyment. प्रभुपाद ने बोला कीर्तन जो है तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। It is for Krishna's ये enjoyment. कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए। Yeah. So we are so accustomed to always seeking our personal enjoyment, but this is our disease, and we have to practice thinking in a different way. तो हमारी आदत बन चुकी है कि हम अपने आनंद के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमको उस चीज को बदलना चाहिए। कृष्ण के एंजॉयमेंट के बारे में सोचें। When you associate with advanced devotees, that's the great benefit, that they will snap us out of that bad habit. It's a bad habit actually. तो ये एक बुरी आदत है, लेकिन जब हम उच्च भक्तों के साथ संग लेते हैं तो हमको इस चीज से बाहर निकालते हैं। One devotee called it a Copernican revolution. तो एक भक्त ने इसको बोला था कोपर्निकन रेवोल्यूशन बोले। I'll explain. You heard about Copernicus? कोपर्निकस के बारे में सुना है आप लोगों ने? It's something you learn. It's like standard knowledge in a natural sciences, or astronomy actually. Copernicus was a Polish astronomer. तो कोपर्निकस जो थे एक पोलैंड देश के एस्ट्रोनॉमर ज्योतिषी थे। Well, the Western version. So his great contribution to astronomy was that he so-called discovered, that actually the planets are not moving around the Earth; they are moving around the sun. तो उनकी खोज थी कि जो planets हैं वो अर्थ के अराउंड नहीं मूव कर रहे, सन के अराउंड मूव कर रहे। Before that, there was the idea. Actually, the Vedas also say that the planets are moving around the Earth. But that's another thing. वो अलग बात है कि ऐसा बोलते हैं कि जो planets हैं वो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं। But let's not talk about that. Point is here, the world is not moving around us, around me. They were moving around Krishna, the sun, तो बात ये है the spiritual sun. बात ये है कि दुनिया जो है हमारे इर्द गिर्द नहीं घूम रही है, बट हम कृष्णा के इर्द गिर्द। So we have to. कृष्णा सेंटर। We have to. सेंटर में नहीं। We have to practice. We have to hear this repeatedly, and try to remember that and think like that. Think about how can we make Krishna happy? Not how can I enjoy? How can I become happy? तो हमें ये हमेशा बार बार सुनना चाहिए, इस तरह से हम एक्चुअली कृष्ण को खुश कर सकें, कृष्ण को आनंद दे सकें, न कि हम अपना आनंद के बारे में सोचें। Taste or no taste,
We should serve Krishna. We should chant Hare Krishna for His pleasure. तो हमें टेस्ट रुचि आए ना आए, बट कृष्ण की आनंद के लिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए. Just trying to think like that, to cultivate that attitude, immediately we will feel some taste. तो इस तरह का जो भाव है, अगर हम उस चीज को कल्टीवेट करेंगे, मतलब I think you get it. तो some taste will be there. सबसे टेस्ट आएगा. We will feel some taste immediately. तो हम अचानक हम देखेंगे तुरंत से हमें वो टेस्ट आ रहा है. इस तरह के भाव हमारी कोशिश करेंगे इस तरह का भाव रखने की, तो तुरंत से हम देखेंगे, फील करेंगे कि हमें टेस्ट आ रहा है. But then after 5 minutes we forget it. लेकिन 5 मिनट के बाद हम फिर भूल जाएंगे. We're back to the same old habit, you know. फिर से हमारे वही पुराना आदत जो है हमारा उस पे आ जाएंगे. So, but that's the neophyte condition. लेकिन ये कनिष्ठ भक्तों की स्थिति है. We have to practice. लेकिन हमें ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. And the practice makes perfect. प्रैक्टिस से हम परफेक्ट हो सकते हैं. Then the more we practice, the more we will actually. सबसे अच्छे कीर्तन लीडर है. I met him over recent years because he spent some time in France where I was staying, so I had a bit of association with him. तो मैं उनसे फ्रांस में मिला था, उनके साथ मुझे कुछ संग मिला था फ्रांस में. And last time I met him was in Delhi last year in what was it, November. लास्ट टाइम मुझे दिल्ली में वो मिले थे नवंबर में. He happened to be in our Dwarka temple and he came. He just came. He showed up one day there. तो मैं द्वारका टेम्पल में था, वहाँ पे वो मुझे मिले थे, अचानक से वो वहाँ दिखे. And he also mentioned, he laid across some wonderful kirtan, and he mentioned also that in the early days of ISKCON they only knew 4 or 5 melodies, maybe 5 6 melodies. बता रहे थे कि कैसे पुराने दिनों में बस 4-5 ट्यून होते थे कीर्तन के. So, but they weren't, it wasn't a problem. They still had ecstatic kirtans. तो उस समय कोई समस्या नहीं थी. उस समय बहुत ही अच्छा कीर्तन होता था. It's not about the melody actually, ultimately. उस समय मेलोडी के बारे में, राग के बारे में लोग ध्यान नहीं देते थे. If we are chanting from the heart, we can chant the same melody, for hours and not get tired. तो अगर हम दिल से गाएंगे तो सेम मेलोडी, सेम राग जो है 3-4 घंटे तक गा सकते हैं और हम बोर नहीं होंगे. Prabhupada, he would mostly chant the same old melody which everybody knows, the first original Hare Krishna melody. प्रभुपाद का हम देखते हैं कि किस तरह से वो सेम मेलोडी जो है वही गाते थे. वो ऐसा नहीं कि नया कुछ ला रहे हैं. So how many types of kirtans like that we hear nowadays? अभी हम कितने तरह के कीर्तन सुनते हैं. I'm not saying it's wrong to chant different melodies, but sometimes it becomes all about the melody. Oh, then this melody is boring. We've been chanting this for 5 minutes. Some other melody. Come on. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बट कितने तरह की मेलोडी हमको चाहिए. हम अभी कुछ नया चाहिए, अभी बोर हो गए. Sometimes actually it's good just stick to one melody. तो कभी-कभी अच्छा होता है कि हम स्टिक रहें कि एक ही राग गाएं. Doesn't mean it has to be monotonous. Same melody doesn't mean monotonous. तो एक ही राग का मतलब ये नहीं कि वो बोरिंग है. There are many ways. If we looking for ways to spice up the kirtan, there are ways you can do that in very nice ways even without changing melody. तो हमको लगता है कि हम कुछ ना कुछ नया करें, उसको कीर्तन को और मसाला उसमें डालें, कुछ तो मजा आए उसमें, लेकिन बिना उसके भी हम कीर्तन को आनंद ले सकते हैं. कीर्तन का one very basic, I'm going to stop now, but this is something I like to talk about because I think that this, again, it's my opinion, nowadays in ISKCON there are many ways we could improve the way we do kirtan. ये मेरा मानना है कि बहुत तरीके से हमें कीर्तन को इम्प्रूव कर सकते हैं ISKCON में. तो मैं उसके बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ. And one way is we go back to and actually try to remember or find out how did Prabhupada teach us to make kirtan. एक तरीका ये है कि हमको प्रभुपाद ने किस तरह से बताया था कि किस तरह से हमें कीर्तन करना चाहिए. For instance, you can read in the Lilamrita how he trained the devotees in Montreal, same time. तो हम लीलामृत में देखते हैं प्रभुपाद ने किस तरह से मॉन्ट्रियल में ट्रेन किया था भक्तों को. Before he sent these 3 Grihastha couples to London.
उन्होंने 3 गृहस्था कपल को भेजा था लंदन उससे पहले. He trained them how to make kirtan. उन्होंने उस समय उनको ट्रेन किया था किस तरह से कीर्तन बनाना चाहिए. And the same, and one thing that he stressed was, you start slow. एक चीज उन्होंने बताया था, बहुत ही स्ट्रेस किया था कि आप स्लो स्टार्ट करो, धीरे से स्टार्ट. मतलब If you don't take away anything else from this, try to remember this. When you make kirtan, if you are asked to lead kirtan, try to remember it's almost a universal, I would say, key to success, key to ecstatic kirtan. Start slow. तो एक अच्छे कीर्तन के लिए मैं बोलूँगा कि ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमको स्लो स्टार्ट करना चाहिए. Sometimes you can exaggerate even a little and try to make it really slow for the start. शुरू के लिए हम बहुत ही एकदम स्लो से स्टार्ट कर सकते हैं. Like Hare Krishna, Hare Krishna, like that. Slow. इस तरह से हमें स्टार्ट करना चाहिए. Almost falling asleep. जैसे कि हम सो जाए. We are so stressed out in this modern world. It's sometimes we just need to sit down, take a breath, relax. तो हम बहुत ही स्ट्रेस में है इस दुनिया में अभी आजकल के टाइम में, तो हमें कभी-कभी टाइम निकाल के थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए. और so it has this effect, if we start out slow, it just makes us relax. तो हम इस तरह से धीरे-धीरे से स्टार्ट करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो उससे हमारा उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा. And then Prabhupada taught us, you gradually build up the temple. और फिर प्रभुपाद ने बोला कि धीरे-धीरे उसके ऊपर आप उसको बढ़ा सकते हो उसका. Depending on how long time you have, you can build it. You can stretch it out. One can also build out the temple more fast. तो डिपेंड करता है कितना समय है हमारे पास. अगर समय ज़्यादा टाइम है तो एक ही रात को हम काफ़ी देर तक रखेंगे स्लो, एंड देन लास्ट में उसको स्ट्रेच करेंगे, अलाउड करेंगे. But try to remember this. I really recommend this. Next time you are asked to lead kirtan, try to start slow. It really, how to say? It really makes for nice kirtan. It's almost like a key to success, key to ecstatic kirtan. प्रभु जी बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम कीर्तन करते तो उन्हें रिमाइंड करने को कि स्लो स्टार्ट करें, और उसको फिर ये एक्चुअली इसी से हमको एक्चुअली सक्सेस मिलेगा. सक्सेस इन द सेंस कीर्तन में कैसे हम कीर्तन का असली जो भाव होना चाहिए वो हम पा पाएंगे. स्लो स्टार्ट करेंगे एंड देन टेम्पो बिल्ड होगा. I guess it's because Krishna likes it that way. तो ऐसा मानना है प्रभु जी का कि कृष्णा को शायद ये पसंद है. Because as I said, that's of course the real key to getting a taste for chanting, to do it for for Krishna's pleasure. और ये ही तरीका है कि क्या बोलते हैं हमारा चैंटिंग में नाम में रुचि तभी डेवलप होगा. Okay, Hare Krishna. Yes, if there are some questions, if we have time. किसी को कोई प्रश्न है या कमेंट है? I think this is the last thing that you told now. Because when we chant, now I'm realizing it is to escape something we are chanting Hare Krishna. But this method, slower, I think the best part. या प्रभु जी वही बोल रहे हैं कि स्लोली एकदम स्लोली स्टार्ट कीजिए एंड देन ग्रेजुअली I'm chanting to escape something. Yeah. 2 months 16. Yeah. I'm now doing some escaping something. But this thing is really the proper thing what you just said. I mean, it's a little interesting, Very interesting. If you we always criticizing all these bogus gurus, which Prabhupada used to say, India's main export commodity is bogus gurus, bogus swamis. प्रभुपाद ऐसा बोलते थे कि इंडिया का मेन एक्सपोर्ट जो है, क्वेश्चन नहीं था माता जी, वाज जस्ट कमेंटिंग. तो प्रभुपाद ऐसा बोलते थे कि इंडिया का मेन एक्सपोर्ट जो है वो बोगस गुरु बेचते थे बाहर. But what is it that makes Indian sadhus attractive to people outside of India? ये ऐसी क्या बात थी जो इंडियन साधु जो होते थे वो बाहर के लोगों को अट्रैक्टिव लगता था? Even if they are false. भले ही वो ढोंगी भी हो तो भी ऐसा क्या था? Because they don't know us. They don't know. That's one thing, but it's a rhetorical question.
I have my observation is that the main thing is that there is some goodness, there's some sattva guna. तो ऐसा प्रभु जी का ऑब्जर्वेशन है कि कुछ तो उनमें सत्वगुण होता था, शायद इसके लिए उनको वो आकर्षित करते थे. ढोंगी गुरु रहते थे फिर भी थोड़ा सत्वगुण है तो उनको आकर्षित करता. Because people are just so disturbed, it's, in this modern age. It's just so much stress, so much pressure. तो हम देखते हैं अभी के टाइम में खासकर पश्चिमी देशों में लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ही ज़्यादा परेशान, तो उनको शायद वो आकर्षित करता था. They cannot relax. It's just they have to take pills to fall asleep. तो हमें सोने के लिए भी दवाई लेनी पड़ रही है, ऐसी हालत होती थी. So just to meet a person who's a little peaceful. So it's so wonderful. तो एक ऐसा व्यक्ति दिख गया जो कि शांत दिख रहा है और सत्वगुण में थोड़ा दिख रहा है, तो हम आकर्षित हो जाते हैं. Just I'll give one example. There was one very famous. He's one of the big gurus these days. I don't mention his name because somebody may take offense. But तो एक एग्जांपल, एक उदाहरण देना चाहते हैं प्रभु जी जो कि बहुत बड़ा है, बट नाम नहीं लेना चाहते हैं. One of his, actually husband of one of his followers, told me, because he came to Norway also. I was living in Norway for some years, so he came there also and did some public programs. एक उनके कोई फॉलोवर ने एक पब्लिक प्रोग्राम किया था, नॉर्वे में थे प्रभु जी, नॉर्वे में किया था. So one program at least, that was what I was told by this friend of mine, that he heard from his wife, that he just came to the program, then he just sat down and he just looked around. Like that. उनके मित्र ने बताया, उनके मित्र की वाइफ ने उनको बताया था कि उसने जो प्रोग्राम किया था, पब्लिक प्रोग्राम, वो बस चुपचाप बस ऐसे बैठ के. And then he said, let's be silent. और उसने ऐसा बोला कि बस let's be silent. And then they just sat there silently, and he looked around and he was very peaceful and he was smiling. And, they thought it was so wonderful. तो वो बस इस तरह से बोला उन्होंने कि बस लोग भी बस उनको देख रहे हैं, लोगों को भी लगा कितना. But there's truth to this, But ये सच्चाई. We don't say this just let's be silent. No, we say let us chant Hare Krishna. But that's real silence. That's silence from all these nonsense material vibrations. तो सच में शांति ये है कि हम भगवान के नाम का कीर्तन करें. वो सच में, क्योंकि वो हमको संसार की जो अशांति उससे दूर रखती है. But the holy name is all powerful. You don't have to, there's no need to be restless. You don't need to do anything yourself. Just let the holy name work. तो हमें खुद से कुछ नहीं करना है, बस होली नेम जो है वो खुद अपना काम खुद करेगी हमारा. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको बस नाम का आश्रय लेना है. And as Prabhupada taught us, it's in some ways it really works better if we at least start the kirtan slowly. तो इसके लिए प्रभुपाद बोलते थे कि ये काम करता है जब हम कीर्तन जो है शुरुआत जो है धीरे से करते हैं, धीमे से स्टार्ट करते हैं. I noticed it always works. मैंने ऐसा देखा है, नोटिस किया है कि हमेशा काम करता है. We may say it's a material trick, but not completely, because it's the way that Prabhupada told us to do it. आप बोल सकते हैं कि एक स्लो स्टार्ट करना ये जस्ट एक भौतिक ट्रिक ही तो है, लेकिन प्रभुपाद ने हमको बताया और ये काम करता है. And the fact is, we need to slow down. We need to, relax. तथ्य तो यही है कि हमें स्लो डाउन हो जाना चाहिए और रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि हम डिस्टर्ब हैं, तो ये हमें चाहिए एक्चुअली. कीर्तन हमारा पूरा कर सकते हैं. You agree? आप लोग सहमत हैं? In other words, we need to come to more goodness. दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें सत्वगुण में आना चाहिए. Okay, Hare Krishna. Yes, Mother. See, in the temples I've seen that during Kirtan, we are not facing the devotees, but we are facing like this, like males and Prabhujis and Matajis, and then I've seen the singer, like the Kirtan. You have to speak a little louder. Prabhuji, we have seen, I have seen in our ISKCON temples, we are not facing, during Kirtan, we are not facing the deities, but like the Prabhujis, Matajis, they sit in a circle and the singer is there, so there is some thought behind it, like we're not facing the deities. yeah, we face. Sometimes it's like that, yeah. Mostly we are facing the deities, actually.
But sometimes we devotees do different dances and this and that. That's what you're talking about. I have seen in our temple, like they are seated in this way, and then mostly people are seeing the one who is doing kirtan. They are. So she's saying that mostly people are just looking at the who is doing the kirtan. They are not. Nobody's looking at the deities. I don't know. Maybe sometimes in some places it's like that. But my general observation is that oftentimes it's like devotees, they have blinders and they don't look at each other. They only look at the deities. They're like, it's me and Krishna and all these other people, what are they here for anyway? It's just me and Krishna. Sometimes it's also like that. कभी-कभी प्रभु जी बोल रहे मैंने तो ऑब्जर्व ये किया है कि डिवोटीज जो है वो बस एक ऐसा लगा के रखते हैं और बस मैं और कृष्ण, बाकी किसी को देखना ही नहीं, बस मैं और कृष्ण, बाकी कोई मैटर नहीं करता. Yes or no? क्या ये सही है? So I would say, yes, we should certainly look at deity. We're doing it for the pleasure of Krishna. तो मेरा मानना है कि हाँ, हमें डेटीज को देखना चाहिए क्योंकि हम तो कृष्ण की आनंद के लिए कर रहे हैं ये सब. We shouldn't just forget about the deity and just, sometimes it becomes like that. I agree. Sometimes it becomes like, just some party, and we forget, that Krishna is there on the altar and it's just, we're just having fun. मैं ये मानता हूँ कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे लग रहा है कि पार्टी चल रही है और जस्ट कृष्ण को भूल ही जाते हैं. Running around, jumping, and बस हम जंप कर रहे हैं, उछल रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. That's also, we have to also, try to not go overboard with that. I agree. तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये जो. We shouldn't, just get so absorbed in the so-called ecstatic dancing and this and that we forget about, Krishna who's standing there on the altar. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा हम मग्न हो गए हैं कि कृष्ण को भूल ही गए. Sometimes if you take a step back and you observe what's going on in the temple room, I agree that sometimes it becomes like that. कभी-कभी हम प्रभु जी बोल रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि कभी-कभी ऐसा माहौल हो जाता है जिसमें कि लोग बस उसमें ही लीन हो जाते हैं, उछलने कूदने में और एंजॉयमेंट करने में. But we should look at the other devotees. It's not just me and Krishna, it's me and Krishna and all the other devotees. तो ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ कृष्ण को ही देखना है. मैं कृष्णा और सारे भक्तों को साथ में लेके चले, हमें दूसरे भक्तों को भी देख सकते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं और कृष्ण तीनों को ही. तो ये भी सही नहीं है कि मैं और कृष्ण. I have to say in later years, this is something that I always try to remember, that I don't only come to the temple to see Krishna, I come to see Krishna and the other devotees. मैं आता हूँ टेंपल तो मुझे, मैं ये बात याद रखता हूँ, मैं टेंपल आ रहा हूँ तो मुझे कृष्ण और कृष्ण के भक्त दोनों को ही देखना है. We are even in you find the same idea is actually there. Everything is there in the ISKCON prayers and in the verse Ainanda Tanudya Kinkaram Patitamam Vishame Bhagamuram Kripaya Tavapada Stita Duli Sadrisham Vichintaya. The Lord is praying, let me become not the particle of dust at the feet of the Lord, but one of the particles of dust. तो ये विचार हम देखते हैं ISKCON में चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं कि हमें भगवान के चरण कमल की एक धूली के बराबर अपने आप को सोचकर बनना चाहिए. There are many particles. We are all like particles of dust on the Lord's lotus feet, but there are many particles of dust, and we are just one of them. तो बहुत सारे भगवान के चरण में बहुत सारे धूली के कण हैं. हम उनमें से एक बनने की सोच रहे हैं, नहीं कि आप ही एक, बहुत सारे उनमें से. So we should, interact with the other devotees. तो इसके लिए हमें बाकी भक्तों के साथ भी इंटरैक्ट करना चाहिए. And for me, at least, in some ways, I find it easier than interacting with the deity. Because I'm not so advanced, that, I can just, have loving reciprocation with Krishna. But with the other devotees, it's quite plain, it's very easy to have some interaction. Because मुझे ऐसा लगता है कि भक्तों के साथ इंटरैक्ट करना ज़्यादा आसान है. और मैं इतना उच्च स्तर का नहीं हूँ कि मैं भगवान के साथ इंटरैक्ट करूँ, भगवान के साथ डीलिंग करता हूँ. And भक्तों के साथ ज़्यादा आसान है. It's not wrong to look at the other devotees, smile at the other devotees, तो ये गलत नहीं है कि भक्तों को देखना और भक्तों के साथ इंटरैक्ट करना, उनके साथ स्माइल करना एक दूसरे को देख के, तो ये गलत नहीं है. Making music is a very social thing. Making music is a very social thing. म्यूजिक बनाना एक सोशल चीज़ है.
To make nice music, it's a group effort. वो एक ग्रुप का एफर्ट होता है. Especially, in anything we do, there's always a leader, and we should surrender to that setup. So when there's a kirtan, we should recognize who's leading the kirtan here, and we should pay attention to that person, and he should pay attention to the devotees, both ways. हर एक चीज़ में हम देखते हैं कि एक लीडर होता है, तो वैसे ही कीर्तन में भी एक लीडर होता है, तो हमको उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह से म्यूजिक को लीड कर रहा है, तो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए. It's maybe I shouldn't say it's annoying, but I feel that it's if the one who's leading the kirtan is just standing there and looking at the deities and chanting, and the other devotees, they kind of don't exist. It's not the best. मुझे ऐसा लगता है कि कोई जो लीडर है, कीर्तन लीडर, अगर वो सिर्फ कीर्तन कर रहा है और सिर्फ टीटीज को देख रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी कोई है ही नहीं, तो वो सही तो नहीं लगता है. वो he should interact with the other devotees, show them, indicate to them what he wants. He's the kirtan leader, so he should decide ideally how the kirtan should be. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे तो देखना चाहिए बाकी भक्तों को, और क्योंकि वो लीड कर रहा है, उसको थोड़ा सा इशारा देना चाहिए किस तरह से मुझे कीर्तन लीड करना है, कि उनको पता चले कि हाँ अभी क्या करना है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ Prabhu ji actually trying to say वो कंडक्टर वो सिम्फनी चलाता है. Yeah, exactly. I was also thinking, example, in Western music we have the conductor. So the kirtan leader is like the conductor. Yeah. And the conductor is, he doesn't make any sound. It's a peculiar thing. The conductor, he's making music without even making one sound. Just by, standing there and indicating to the musicians how they should play. He's actually the main musician, but he doesn't make any sound. It's quite, interesting. तो आप लोगों ने सुना माता जी बता दी किस तरह से जो मेन लीडर होता है वो बस इशारे करता है, बट वो खुद म्यूजिक में एक्टिवली We all had no Zubain Mehta. He was a world class. तो वो वही बात. So the kirtan leader should be a little like that, He should, he should be very, how to say, interactive, very, he should communicate with the devotees, especially those who play instruments. तो कीर्तन लीडर को तो बात करना चाहिए, इशारे करना चाहिए, जिससे कि वो उनको पता चले कि क्या करना है. What actually annoys me is if I'm leading the kirtan, somebody else is playing the mridanga, and I want to speed up the kirtan, and I try to communicate with the mridanga player, and he just doesn't. He's just in his. He doesn't. I cannot catch his. I cannot catch his eyes. He won't look at me. I try to. He just looking somewhere else. Or even he looks at me. He's just. What does he want from me? मुझे बता रहे किस तरह से कभी वो कीर्तन लीड कर रहे हैं और सामने वाला वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, उनको कीर्तन को फास्ट करना है, मान लो वो मृदंग बजाने वाला देख ही नहीं रहा है, वो अपनी दुनिया. When the kirtan leader indicates the mridanga player he should speed up, doesn't mean just higher tempo, but also some faster beat, some louder beat. He should respond. He should do as follow the indication of the kirtan leader. तो उसको मृदंग बजाने वाले को उसको उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना कि वो अपने दुनिया में रहेगा. तो वो कम्युनिकेशन तो चाहिए. So anyway, there are many things like that. It's not black and white, but when we come, to the Kid temple, every day or every week, often like that, then we start to think about all these little things, and it's all about pleasing Krishna. But pleasing Krishna is a great art. It's a great art. It's not just we have to learn how to do it. तो हमें कृष्ण को आनंद देने की सोचनी चाहिए, और कृष्ण को आनंद देना एक कला है, वो हमको सीखना चाहिए. और हम आएंगे मंदिर तो सीखते हैं, देखते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं. We like good music. Krishna also likes good music. So what's wrong with learning how to make nice music for Krishna? It's not wrong. It's not that we just come to the temple and bang the bells, just make some noise. It should be beautiful. Kirtan should be, as Prabhupada said, sweet and melodious.
तो हमें अच्छा म्यूज़िक पसंद है, कृष्ण को भी अच्छा म्यूज़िक पसंद है, तो हमें एक्चुअली अच्छा म्यूज़िक कैसे करें उसके लिए हमको सीखना चाहिए, जिससे कि कृष्ण को आनंद मिलेगा कि बस कुछ भी बजा रहे हैं जो धूमधाम कर रहे हैं, वो सुंदर होना चाहिए. Then Krishna will be happy and we will be happy. कृष्ण खुश हो जाएंगे और हमें भी खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, कृष्ण को भी हमें मिलेगा. Hare Krishna. Yes, actually, in starting you say it's a very bad to get away from the place where we, for example, in Sankirtan, when the next person is chanting very enthusiastically, we feel the same enthusiasm in Sankirtan, but not in the personal chanting. For example, I see I'm chanting my rounds and the next person is like Hare Krishna, Krishna Krishna. So I feel like disturbance. Yeah. So I usually do, I get up and go somewhere else and chanting. So what to do? Because you said that's a very bad thing to get up, not associate with the chanting as well. I said it's a bad excuse. That's what I said. How can we Yeah. Stick it out. That's my advice. Stay anyway. Coexist. I mean, at least we can be in Learn to vicinity. coexist. You know, I mean, you don't have to agree. Somebody will disagree. But what I feel is, my answer is, better stick it out. Stay in the association. Everything is, nicer when you do it together with other devotees. And yes, when we are together with others, problems are there. Whenever some more than one, as soon as two people are together, friction will come. That's just the nature of life. But the solution is not to, become a recluse and just go on your own. We should stick to the association of devotees, even if there is some problem with that. That is my firm advice. तो मेरा एडवाइस है कि हम देखते हैं कि हम साथ में रहते हैं तो थोड़ी घर्षण होती है, थोड़ी फ्रिक्शन होती है, थोड़ी नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको बिल्कुल अलग ही हो जाना चाहिए, कट के रहना चाहिए, वैसा भी नहीं होना चाहिए. If we disassociate ourselves from the society of devotees, then immediately, Prabhupada said that also, it means immediately we are becoming victimized by Maya. प्रभुपाद भी बोलते थे, जैसे ही भक्तों का संग छोड़ते हैं तो माया का प्रभाव हमारे ऊपर तुरंत से काम करेगा. It doesn't mean that you have to, force yourself to associate with that devotee who's just, doesn't like you for some reason or another. Maybe it's a good reason, but, we among the devotees, we can also be a little discriminating, Find out the devotees, who we get along with. Not for material reason, but just, somehow we understand each other better. We can do that. I think it's quite okay. But we shouldn't go away. तो हमें ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती किसी के साथ संग लेना ही लेना है. हम थोड़ा सा संग लेने में थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वो जो कारण है वो भौतिक नहीं होना चाहिए. और हम देख सकते हैं कौन समान भक्त जिनके साथ हम रह सकते हैं, जिनसे कुछ भी. तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर किसी के साथ जबरदस्ती आपको रहना ही रहना है, संग लेना ही लेना. थोड़ा सा उसमें देख सकते हो, निर्णय ले सकते हो कि हाँ किनके साथ लेना, बट भौतिक नहीं होनी चाहिए. I got a little note here. There are 5 minutes left. So, yeah. Anyway, that's very important. Try to, as much as possible, stay in the association of devotees, and it's really a lot of. We will get a lot of strength if we just understand that one rule. Man is a social animal, and if we don't associate with devotees, we're going to associate with non-devotees, and that will simply destroy us. So even if there's some problem in the association of devotees, tolerate it, try to work around it, but don't leave the association of devotees. Very important. हमें भक्तों का संग छोड़ना नहीं चाहिए, वही हमारे लिए सफलता दिलाएगी हमें. और हमारा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको संग चाहिए, तो हमें भक्तों का संग लेना चाहिए, ना कि अगर भक्तों का संग छोड़ेंगे तो हम बाहर संग लेंगे तो उससे हमारा फिर नुकसान ही होगा. I'm talking as somebody who's been,
sticking it out in ISKCON for 45 years, so I know what I'm talking about. Mostly living in temples, as a ashram devotee. Yeah, even when I was a grihastha many years ago, we still lived in the temple actually. That ashram devotee, Ashramite means somebody who lives in the brahmachari. Here I don't know if you have brahmacharini ashrams. It's something of the West. Prabhupada created the brahmacharini ashram. You know this? This was Prabhupada's invention. In India, it doesn't exist. But he understood the situation in the West. He had to do that. Anyway, I just came from Puri, and there's something very powerful, in worshipping the Lord of the universe together with 1 lakh other devotees. There's something about it, it really gives some energy, प्रभु जी अभी जस्ट पूरी से आ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रभु जी पूरी से आ रहे हैं, तो बता रहे हैं किस तरह से 1 लाख भक्तों के साथ भगवान को की पूजा करना वो एक अलग बात होती है, एक अलग शक्ति देती है. I had a desire for many years to go to Puri for Rath Yatra. बहुत सालों से इच्छा थी प्रभु जी की कि वो पूरी जाएं रथ यात्रा के दौरान. That's our only chance for us Whiteys to have darshan of the Lord in Puri. यही एक समय होता है जब हम वाइट भक्त जो है हमें मौका मिलता है भगवान के दर्शन करने. We are untouchables. We are not allowed inside the temple. हम तो अछूत हैं, हमें परमिशन नहीं है मंदिर अंदर जाने का. It's also a humbling experience. You come to the. You are not a Hindu. No, you cannot come in. ये हमारे लिए ऐसा अनुभव देता है, हमें बताता है कि हमारी क्या हैसियत है हमारी. But especially at the end of Rath Yatra, Lord Jagannath is very merciful. लेकिन यात्रा के अंत में हमें पता चलता है कि जगन्नाथ कितने दयावान हैं, कितने कृपालु हैं. When Rath Yatra is actually over, he stays outside the main gate for actually several days. Actually, Lord Jagannath, he stays on the cart on the Rath for several days. जब भगवान जगन्नाथ जो है काफी दिन तक वो रथ में रहते हैं अभी इस टाइम में. And day and night he's giving darshan. वो दिन रात दर्शन देते हैं. Even in the middle of the night you can come and take darshan of Jagannath. बीच रात्रि में भी आप जाके दर्शन ले सकते हैं. Many devotees have put it on Instagram. Nadi Rath ka darshan and all. Many devotees have put it that they are taking darshan during midnight and all. Yeah. Because it's still on the. It's a great opportunity. It's the I thought it was I got a I really felt some inspiration. I'm very happy that I finally made it. Went to Puri for Ulta Rath, as they call it, the second part. First part is just too crowded, You're not going to come anywhere near unless you want to take the risk of, just getting trampled. So. Anyway, Hare Krishna. You translate that, and I have to stop it. Otherwise, he's gone. Sorry, you said that it's a risk of getting trampled. Yeah, if you try to, if you come during when Jagannath goes to Gundicha, it's so crowded.